Good morning, everyone, and welcome to my channel. Today, we are going to read the fundamental rules. So, here we begin. It says these rules may be called FRSR rules. Okay, इसका डेट है आपका 1 1922. ठीक है, 1 जनवरी 1922 के रूल आए थे आपका. ठीक है, एंड द फंडामेंटल रूल्स जो है अप्लाई सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ रूल 3. ये जो है अप्लाई होता है सब्जेक्ट टू द रूल ऑफ रूल 3 टू ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज डेबिटेबल टू सिविल एस्टिमेट्स एंड टू एनी अदर क्लास ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट टू विच द प्रेसिडेंट मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डिक्लेयर देम टू बी एप्लीकेबल. ठीक है, ये जो है उनके ऊपर एप्लीकेबल होंगे जिनके ऊपर जिनकी जो पे है उस पे इज डेबिटेबल टू सिविल एस्टिमेट एंड टू एनी अदर क्लास ऑफ गवर्नमेंट जिनको प्रेसिडेंट ने जो है जनरल ऑर्डर या स्पेशल ऑर्डर बोल रखा है तो उनके ऊपर एप्लीकेबल होंगे. ठीक है, एप्लीकेबल टू सिविलियन टेम्पोरली ट्रांसफर टू सर्विस पेड फ्रॉम डिफेंस एस्टिमेट. क्या ये उनके ऊपर एप्लीकेबल होंगे? बोलता है a government servant paid from civil estimate who is temporarily transferred to service paid from defense estimates remains subject to fundamental rights. ठीक है, and no similar general protection has been extended to government servants subject to civil estimates, civil service regulations and paid from defense service estimates who are temporarily transferred to service paid from civil estimates. These government servants ipso facto become subject to the FR and all purposes except for leave while so transferred. तो ये आपका दोनों इम्पॉर्टेंट है. हम देख लेते हैं एक बार इसको. ये इप्सो फैक्टो मतलब मुझे लग रहा है शायद ऑटोमेटिकली होता होगा. तो फैक्टो मीन्स बाय द वेरी फैक्ट, बाय द वेरी एक्ट. ओके, पर है ये आपका इप्सो फैक्टो. बाय द वेरी फैक्ट का मतलब क्या हुआ देख लेते हैं. देखिए, एप्लीकेबिलिटी टू सिविलियंस. ओके, जो भी सिविलियंस हैं, दोज हु आर टेम्पररी ट्रांसफर टू सर्विस पेड फ्रॉम डिफेंस एस्टिमेट. हालांकि जो है दे आर पेड फ्रॉम डिफेंस एस्टिमेट्स. तो क्या ये उनके ऊपर रूल एप्लीकेबल होगा? देखिए, फर्स्ट थिंग क्या कहता है आपका, ये रूल जो है वो एप्लीकेबल होगा किन के ऊपर? जो भी सिविल एस्टिमेट से पे हो रहे हैं या फिर प्रेसिडेंट ने जिनके लिए जनरल या स्पेशल ऑर्डर निकाल रहा है. ठीक है, यहाँ पर बोलता है एप्लीकेबिलिटी टू सिविलियन टेम्पररी ट्रांसफर्ड टू सर्विस पेड फ्रॉम डिफेंस एस्टिमेट. जो भी कोई सिविलियंस है टेम्पररी ट्रांसफर हो गए उस सर्विस में जहाँ पर जो है डिफेंस एस्टिमेट से हो रहा है, तो क्या उनके ऊपर होगा? तो द गवर्नमेंट सर्वेंट पेड फ्रॉम सिविल एस्टिमेट्स. ठीक है, वो भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है क्योंकि उसको पेमेंट कहाँ से हो रही है? अभी हाल फिलहाल ही इज पेड फ्रॉम सिविल एस्टिमेट. ठीक है, हु इज टेम्परली ट्रांसफर्ड, जो जो क्या हो गया अभी हाल फिलहाल उसको टेम्परली ट्रांसफर्ड हो गया टू अ सर्विस पेड फ्रॉम डिफेंस एस्टिमेट. और वो ऐसी जगह पर होगा जहाँ पर उनको जो है ही नाउ ही इज गेटिंग पेड फ्रॉम डिफेंस एस्टिमेट. ठीक है, रिमेन सब्जेक्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. ये क्या कह रहा है? रिमेन सब्जेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स मतलब वो भी जो है स्टिल रिमेन सब्जेक्ट टू द फंडामेंटल रूल्स. ये उनके ऊपर एप्लीकेबल होंगे. As no similar general protection has been extended to government servant subject to the civil services regulations. और जो है ये जो नो सिमिलर जनरल प्रोटेक्शन जो है हैज बीन एक्सटेंडेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट. ओके, सब्जेक्ट टू द सिविल सर्विसेज रेगुलेशंस. जो सिविल सर्विसेज रेगुलेशंस वाले जो पर्सन हैं एंड पेड फ्रॉम डिफेंस सर्विस एस्टिमेट्स हु आर टेम्पररली ट्रांसफर्ड टू सर्विस paid from civil estimates. These government servants by the very fact become subject to the fundamental rules for all purposes except for leave while so transferred. ये जो सेकंड वाला जो कह रहा है ये थोड़ा समझ में नहीं आया. देखिए, यहाँ पर ये कह रहा है गवर्नमेंट सर्वेंट जो है हु इज पेड फ्रॉम सिविल एस्टिमेट्स हु इज टेम्पररली ट्रांसफर्ड टू अ सर्विस पेड फ्रॉम डिफेंस एस्टिमेट. कोई भी अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है हु इज पेड फ्रॉम सिविल एस्टिमेट. ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जिसको अभी सिविल एस्टिमेट से पेमेंट हो रही है और उनको टेम्पररी ट्रांसफर कर दिया जाता है टू सर्विस जो कि जिनकी जहाँ से जो पेमेंट होती है डिफेंस एस्टिमेट से होती है, तो ही विल रिमेन सब्जेक्ट टू द फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, चाहे वो बेशक ट्रांसफर हो जाए. हालांकि अभी ले रहे हैं लेकिन जस्ट बिकॉज ही वॉज अ गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम अ सिविल एस्टिमेट तो उनको वो मिलेगी. बट बोल रहा है सिमिलर जनरल प्रोटेक्शन जो है ना, बट एज नो सिमिलर जनरल प्रोटेक्शन हैज बीन एक्सटेंडेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट सब्जेक्ट टू सिविल सर्विसेज रेगुलेशंस. तो ये पर्सन जो है सिविल सर्विस रेगुलेशंस के अंडर में थे एंड पेड फ्रॉम डिफेंस सर्विस एस्टिमेट. जिनको डिफेंस सर्विस एस्टिमेट के थ्रू पेमेंट किया जा रहा था वो आर टेम्परली ट्रांसफर्ड टू सर्विस पेड फ्रॉम सिविल एस्टिमेट. मतलब कि जो वो सिविल सर्विसेज रेगुलेशन के अंडर में थे. ठीक है, यहाँ पर यानी कि वो जो पर्सन्स थे वो क्या था? वो सिविल सर्विसेज रेगुलेशंस के अंडर में थे और उनको पेमेंट हो रही थी फ्रॉम डिफेंस एस्टिमेट.
ठीक है, यानी कि उल्टा बोल रहा है अब इसमें। पहले वाले केस में क्या था, जो सिविल एस्टीमेट में थे और वो ट्रांसफर हो गए डिफेंस में। अब बात कर रहा है कि बोल रहा है ऐसी सिमिलर जनरल प्रोटेक्शन जो है एक्सटेंड नहीं की गई है उन गवर्नमेंट सर्वेंट को जो कि पहले सब्जेक्ट किसके थे, सिविल सर्विसेज रेगुलेशंस के थे। ठीक है, सिविल सर्विस रेगुलेशंस के अंडर में आते थे और उनको पेमेंट होती थी डिफेंस सर्विस एस्टीमेट के थ्रू, हु आर टेम्पररी ट्रांसफर टू सर्विस पेड फ्रॉम सिविल एस्टीमेट। ठीक है, तो अब उनको सिविल एस्टीमेट से उनका ट्रांसफर हो गया, तो दीज गवर्नमेंट सर्वेंट जो है इप्सो फैक्टो बाय द वेरी फैक्ट कि जैसे उनका ट्रांसफर हो गया है तो बिकम सब्जेक्ट टू द फंडामेंटल राइट्स फॉर ऑल पर्पसेस एक्सेप्ट फॉर लीव वाइल सो ट्रांसफर्ड। बस जो वो जो एक्सेप्ट फॉर लीव वाइल सो ट्रांसफर्ड, मतलब जब उनका ऐसे ट्रांसफर हो तो लीव के लिए उनका नहीं होगा, एक्सेप्ट फॉर परमिशन। ये लीव का मतलब क्या है, एक्सेप्ट फॉर लीव वाइल सो ट्रांसफर्ड, एक्सेप्ट फॉर परमिशन सो ट्रांसफर्ड। लीव का मतलब परमिशन भी बोलते नहीं। ओके, अब यहाँ पर लीव का मतलब एक्सेप्ट फॉर लीव रूल्स की बात तो नहीं कर रहा, फाइल सो ट्रांसफर्ड। ठीक है, कोई बात नहीं, बट दैट्स अ गुड वन। ओके, इसको हम दोबारा देखते हैं एक बार कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है अगर वो सिविल एस्टीमेट से उनको पेमेंट हो रही है जो कि टेम्पररी ट्रांसफर कर दिया जाता है उनका, कहाँ पर, जहाँ पर उनकी जो पेमेंट है वो डिफेंस एस्टीमेट से हो जाए, तो ही विल रिमेन सब्जेक्ट टू फंडामेंटल रूल्स। पहला चीज़ क्लियर होगी। दूसरा बोलता है एज नो सिमिलर प्रोटेक्शन हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट सब्जेक्ट टू सिविल सर्विस रेगुलेशन। अब कुछ ऐसे भी हैं यहाँ पर सेकंड में जिनको सिविल सर्विसेज रेगुलेशंस के थ्रू अभी किया जा रहा है, बट ये कह रहा है कि नो सिमिलर प्रोटेक्शन हैज बीन एक्सटेंडेड टू गवर्नमेंट, जो कि अभी अभी जो कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसे हैं जिनको सिविल सर्विस रेगुलेशंस के अंडर में है। ठीक है, और जिनकी जो अभी जो पेमेंट हो रही है ना अभी हाल फिलहाल जब वो सिविल सर्विस रेगुलेशंस में है, तब भी जो है उनको पेमेंट किया जा रहा है, मान लीजिए डिफेंस सर्विस एस्टीमेट से। जैसे मान लीजिए जो डिफेंस में जो सिविलियन जो है उनकी बात हो रही है। ठीक है, पहले वाला केस था कि कोई बंदा सीएसएस का है डिफेंस में चला गया तो ही विल सब्जेक्ट टू रिमेन दिस, बट दूसरा वाला केस है कि जो सिविलियन जो है डिफेंस में है तो सिविल सर्विस रेगुलेशंस के अंडर में है और उनको पे किया जा रहा है डिफेंस सर्विस एस्टीमेट के। अब नाउ उनको टेम्पररी ट्रांसफर किया था टू सर्विस पेड फ्रॉम, अब उनको यहाँ पर सीएसएस में यहाँ पर सिविल एस्टीमेट के थ्रू पेमेंट किया गया। ठीक है, उनको ट्रांसफर किया गया, तो जस्ट बाय द वेरी फैक्ट कि वो यहाँ पर ट्रांसफर हो गए हैं दे बिकम सब्जेक्ट टू फंडामेंटल रूल्स। ठीक है, फंडामेंटल फॉर ऑल पर्पज एक्सेप्ट फॉर लीव वाइल सो ट्रांसफर्ड, एक्सेप्ट फॉर लीव वाइल सो ट्रांसफर। ठीक है, मतलब एक्सेप्ट किसके किसके एक्सेप्ट उनके हैं, ऊपर बोल रहा है नो सिमिलर जनरल प्रोटेक्शन हैज बीन एक्सटेंडेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि सिविल सर्विस रेगुलेशंस में वहाँ पर हैं, पे किया जा रहा है डिफेंस सर्विस एस्टीमेट के थ्रू, टेम्पररी ट्रांसफर किया जाता है उनका सिविल एस्टीमेट में, ट्रांसफर टू सर्विस में। तो दीज गवर्नमेंट सर्वेंट जो है इप्सो फैक्टो बाय द वेरी फैक्ट कि वो उनका यहाँ पे ट्रांसफर हो गया सिविल वाले में, देन दे बिकम सब्जेक्ट टू फंडामेंटल रूल्स। ओके, वर ट्रांसफर टू दिस फॉर ऑल पर्पजेज बन जाएंगे एक्सेप्ट फॉर एक्सेप्ट फॉर लीव वाइल सो ट्रांसफर्ड। ओके, थोड़ा सा एक्सेप्ट विदाउट परमिशन जो है वाइल सो ट्रांसफर्ड, जब तक वो ट्रांसफर नहीं हो जाते। कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा देखेंगे अब, बट अभी थोड़ा सा हमें समझ में आया है इसका ये कहना क्या चाह रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आया है। दूसरा वर्ड देख लेते हैं, एप्लीकेबिलिटी टू डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट पर्सनल, एप्लीकेबिलिटी टू डिफेंस अकाउंट्स। अब कुछ डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट पर्सनल भी हैं, उनके लिए क्या है, अकाउंट पर्सन की बात हो रही है अलग से। द प्रेजेंट प्लीज टू डिसाइड दैट कमेंसिंग फ्रॉम 1 जुलाई 1976 द पर्सनल ऑफ डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट विल बी गवर्न बाय फंडामेंटल रूल्स। तो कह रहे हैं जो भी डिफेंस अकाउंट पर्सन डिपार्टमेंट है विल बी गवर्न बाय फंडामेंटल रूल्स। One, in all matters in which they are at present governed by civil services regulations, and second, in matter of grant of fee and origin now governed under 271 equal, इस तरह से उनको जो है कर दिया है। The employee who are in service of the department on 1st July 1976, including those on deputation foreign services, will be given an option to continue governed by the provision of civil service regulations or to come into over to fundamental rules from this. This option will be exercised on before 1997. Such of the employees who fail to exercise their option will within the stipulated period will automatically be brought under the FR, कि उनको जो है ऑटोमेटिकली वी ब्रॉट इनटू ओवर अंडर FR ऑप्शन 1 विल बी फाइनल। ठीक है, अब बोलता है कंट्रोल जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स ऑर्डर, ऑर्डर है इस तरीके से, क्या कहते हैं आपको कौन दिस द फॉलोइंग सप्लीमेंट्री the option required to be exercised in term of this of the decision by control of defense accounts under whom the employee is serving or whose performance strength he is gone. The non-guest list of the option will be recorded in the service book and this check will be sent to accounts of account service who are on deputation.
तो ये कहते हैं इन द मैटर ऑफ लीव, जैसे लीव, ट्रैवलिंग अलाउंस, पेंशन बेनिफिट जो है ये आपका चलता रहेगा। और जनरल पी एफ डिफेंस जो पी एफ है ना, जनरल पी एफ फंड जो डिफेंस सर्विस रूल चलेगा उसमें एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, FR 3 बोलता है अनलेस, अभी यहाँ पर दीजिएगा बोलता है अनलेस इन एनी केस इट बी अदरवाइज डिस्टिंक्टली प्रोवाइडेड बाय और अंडर these rules do not apply to government servant whose conditions of service are governed by army or marine, unless in any case it be otherwise, या तो otherwise distinctly जो है provided, ठीक है, by under these rules, ठीक है, या तो distinctly provided under these rules, तो these rules जो है do not apply, कहता है these rules do not apply to government servant whose conditions of service are governed by army, या तो unless otherwise provide कर रखा है तो एक अलग चीज़ है, वरना नहीं होगा। ठीक है, where any ministry or department of the government is of opinion that the operation of any of these rules may cause undue hardship to any person, that ministry or department, as the case may be, by order or reason to be recorded in writing, relax the requirement of that rule such an extent and such subject to such condition as it may consider necessary for dealing with the case in just manner, provided the necessary shall be made except with the concurrence of the ministry of finance। ठीक है, तो ये कहता है जहाँ पर कोई किसी भी मिनिस्ट्री को लगता है, अगर किसी भी मिनिस्ट्री को लगता है ऐसा कि अगर उनका ऐसा ओपिनियन है दैट जो ऑपरेशन ऑफ एनी ऑफ दीज रूल्स जो है मे कॉज अनड्यू हार्डशिप अगर हो रही है किसी एनी पर्सन, ठीक है, एज द केस में भी, तो वो क्या कर सकते हैं अपने तरफ से बाय ऑर्डर जो है एक रीज़न निकाल देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे, रीज़न रिकॉर्ड कर देंगे इन राइटिंग, और रिलैक्स कर सकते हैं ना। व्हाट यू कैन डू, दे कैन रिलैक्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दैट रूल टू द एक्सटेंट टू सच एक्सटेंट एज मे कंसिडर नेसेसरी फॉर डीलिंग, कैन नो सच ऑर्डर शैल बी मेड एक्सेप्ट, बट उसके लिए क्या करना है आपको, एक्सेप्ट विद द कंकरेंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू आपको करना है। ठीक है, the central government जो है may delegate to any of its officers subject to any conditions which it may think fit to impose any power conferred upon it by these rules with the following exception, all powers to make rules, and कुछ दे रखा है आपको, no powers may be exercised or delegated under these rules except after consultation with the Ministry of Finance, it shall be open to the ministry to prescribe by general special order in which it will consent or present to have been given। ठीक है, तो no powers may be exercised or delegated, बोलता है no power जो है may be exercised or delegated under these rules except after consultation with Ministry of Finance, it shall be open to the ministry to prescribe by general कोई भी जनरल स्पेशल ऑर्डर के to have been given। ठीक है, जैसे रीडेलीगेशन ऑफ पावर बाय एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री, क्या कहता है इसके administration administration can redelegate power to sovereign authorities in respect of all matter except, ये दे रखा है आपका, ये आ गया ना आपका, certain ministries have this power of DFPR only, it is clarified that this power of redelegation of all set of rules in DFPR GFR supplementary separate होगा। ठीक है, द पावर ऑफ इंटरप्टिंग दीज रूल्स इज रिजर्व्ड टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, पावर क्या कहता है इसके अलावा, द पावर ऑफ इंटरप्रेटिंग, अब इसको रूल को इंटरप्रेट कौन करेगा, इंटरप्रेटिंग जो है दीज रूल्स इज रिजर्व टू प्रेसिडेंट ओनली। ठीक है, बोलता है अनलेस देयर बी, बोलता है अनलेस देयर बी समथिंग रिपग्नेंट in the subject or action, the term defined in the chapter are used in these rules in the same sense here explained। एक्ट का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, एडमिनिस्ट्रेटर मतलब यूनियन टेरिटरी का, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नर ऑफ आसाम एक्टिंग एज एजेंट टू द प्रेजेंट। ठीक है, इसमें गवर्नर ऑफ आसाम को इन्होंने इंक्लूड किया है इसके अंदर, यूनियन टेरिटरी इंक्लूड कर रखा है इसके अंदर, इंक्लूड्स गवर्नर ऑफ आसाम एक्टिंग एज एन एजेंट टू द प्रेसिडेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। अलॉटमेंट का मतलब होता है लाइसेंसी, टू मीन्स अ ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू गवर्नमेंट सर्वेंट टू ऑक्यूपाई अ हाउस, अलॉटमेंट, ऑक्यूपाई अ हाउस, ठीक है, ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और बाय पोर्शन देयर ऑफ फॉर यूज बाय रेजिडेंट। कार्टर का मतलब होता है द स्ट्रेंथ ऑफ अ सर्विस, कार्टर मतलब होता है स्ट्रेंथ की, एक सर्विस की जो है स्ट्रेंथ क्या है, और अ पार्ट ऑफ सर्विस सैंक्शन एज ए सेपरेट यूनिट। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ अ सर्विस। Compensatory allowance means an allowance granted to meet personal expenditure and necessitated by special in which is performed. Compensatory allowance, it includes a traveling allowance but does not include a sumptuary allowance nor the grant of free passage by sea or from the outside name। okay? Compensatory allowance जो है important है। Compensatory allowance क्या कहता है आपको, important है आपका। Compensatory allowance आपका एग्जाम में भी आया था, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको। मीन्स एन allowance, yes,
कोई भी एक अलाउंस जो है, इसका मतलब कोई भी अलाउंस दैट इज ग्रांटेड टू मीट, सेकंड रुकिए, यस, कंपनसेटरी मीन्स एन अलाउंस ग्रांटेड टू मीट पर्सनल एक्सपेंडिचर, ठीक है, ग्रांटेड टू मीट पर्सनल एक्सपेंडिचर जिसके अंदर आप कर सकते हो, ठीक है, नेसेसिटेड बाय फॉर, क्योंकि स्पेशल सर्कमस्टांसेस की वजह से आपको कुछ द ड्यूटी इज परफॉर्म, कोई भी कंपनसेटरी अलाउंस का मतलब होता है कोई भी अलाउंस जो ग्रांट किया जाता है टू मीट द पर्सनल एक्सपेंडिचर नेसेसिटेड बाय, कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए थे, कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए थे की वजह से जो है आपको पर्सनल एक्सपेंडिचर करना पड़ा, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए बोला था कंपनसेशन अलाउंस मीन्स एन अलाउंस ग्रांटेड टू मीट पर्सनल एक्सपेंडिचर नेसेसरी बाय स्पेशल द ड्यूटीज परफॉर्म, ड्यूटी परफॉर्म की जाती है। इट इंक्लूड्स, कहता है कि यहाँ पर क्या है, इट इंक्लूड्स ट्रेवलिंग अलाउंस, ठीक है, यस इट इंक्लूड्स ट्रेवलिंग अलाउंस को इंक्लूड करता है ये इसमें, ठीक है, बट डज नॉट इंक्लूड ए समचुरी अलाउंस, लेकिन इसके अंदर समचुरी अलाउंस जो है इंक्लूड नहीं होते, नॉट द ग्रांट ऑफ फ्री पैसेज, ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, but does not include a sumptuary allowance or the grant nor the grant of free passage by sea or from one side to from any place outside India, ठीक है। ड्यूटी का मतलब है ड्यूटी सर्विस एज अ प्रोबेशनर अप्रेंटिस प्रोवाइडेड दैट सच सर्विस इज प्रोवाइडेड फॉलोड बाय कंफर्मेशन, तो यहाँ पर सर्विस का मतलब है कोई प्रोबेशनर भी है तो भी काउंट किया जाएगा सर्विस में, ठीक है, सर्विस एज अ प्रोबेशनर कोई कर रहा है तो, या फिर कोई अप्रेंटिस कर रहा है, प्रोवाइड दैट सर्विस इज फॉलोड बाय कंफर्मेशन, और ज्वाइनिंग टाइम भी आपका ड्यूटी में ही माना जाएगा। अ गवर्नमेंट सर्वेंट में भी treated on duty as on duty during a course of instructional training, इवन ट्रेनिंग का भी होता है, इसमें भी आपको ड्यूटी पर माना जाएगा, कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल ट्रेनिंग है, ठीक है। इन द केस ऑफ अ स्टूडेंट स्टिपेंडियरी or otherwise who is entitled to be appointed in the service of government on passing through a course of training at university, college or school of interval between the satisfactory completion of the course and तो उसको भी आपको ड्यूटी पर ही माना जाएगा, ठीक है, ठीक है। सब कुछ क्या आ जाएगा आपका, ये सब कुछ मिला है क्या बनेगा आपका, ड्यूटी बनेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं अटेंडिंग डिपार्टमेंटल ऑब्लिगेटरी एग्जामिनेशन, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट रिक्वायर्ड टू अटेंड एन ऑब्लिगेटरी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन परमिटेड टू प्रेजेंट हिमसेल्फ एट एन एग्जामिनेशन पासिंग द कंडीशन मे बी ट्रीटेड एज ड्यूटी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी मे बी ट्रीटेड एज ड्यूटी ऑन ड्यूटी ड्यूरिंग द डे और डेज ऑफ एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द रीजनेबल टाइम रिक्वायर्ड फॉर जर्नी इफ एनी एंड टू एंड फ्रॉम द प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन। कुछ ऑब्लिगेटरी एग्जामिनेशन अगर होती है तो इट विल बी ट्रीटेड एज ड्यूटी, ठीक है। ओपन कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता तो कह रहा नो ट्रैवलिंग अलाउंस विल हाउ बी एडमिशन टू गवर्नमेंट सर्वेंट अपीयरिंग इन एग्जामिनेशन, ठीक है। इन स्पेशल कैजुअल लीव दे सकते हैं टू गवर्नमेंट सर्वेंट हु आर एलिजिबल टू अपीयर डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्जाम, तो अब उसके क्या देते हैं, स्पेशल जो है कैजुअल लीव में बी ग्रांटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट हु आर एलिजिबल फॉर departmental promotion examination which are neither obligatory nor entail a condition of preferment in government service, limited government exam for section officers period of this जो है ना department special case will not however be admissible to department held by UPSC, okay। जो है आपका बोलता है conditions for training for treating training as duty, okay, it has been decided that authorities are government to appoint a government servant to the post of to the post for which the training session may be empowered to treat the period of training or instruction of India of government, government of India servant as duty under this rules for training should be in India,
कंडीशन फॉर ट्रेनिंग ड्यूटी क्या क्या है, इंडिया के अंदर होनी चाहिए, शुड बी इन इंडिया, ट्रेनिंग शुड बी कंडक्टेड विद पोस्ट व्हिच गवर्नमेंट सर्वेंट इज होल्डिंग एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग हिम ट्रेनिंग on 100% for refresher training to section officers कह रहे हैं, treated as duty, okay, reservist training in National Defence College as duty of enforcement halt as duty, period of involving verification and inspection of source in the case of engineer officers, verification training of पार 9 क्या कहता है आपका, क्या 9 तो सिर्फ बिफोर रखी 9 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देंगे इस पर, ठीक है। डेफिनेशन देख लिया आपने, ड्यूटी तक यहाँ तक क्लियर आ गया, अटेंड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन आपने देख लिया, ठीक है। ट्रेनिंग बिफोर अपॉइंटमेंट टू विटनेस ड्यूटी फॉर एनी डिपार्टमेंट, training before appointment to be period of training before appointment to be as period of training आपकी कोई भी होती है for increment के लिए, period of training before appointment to be counts as qualifying pension, okay, period of participation in national international sports event as due, period of waiting on joining from leave for posting orders to be as duty, period of waiting joining from leave posting orders का माना जाएगा ड्यूटी, ठीक है। लीव टू प्रोफेशनल, कुछ ऑडिट इंस्ट्रक्शन दे रखी है, ये इंपॉर्टेंट है। Does not cover government who holds such an appointment person charter and is appointed probation, यहाँ पर फी का मतलब क्या है, फी का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। फी का मतलब है रिकरिंग और नॉन रिकरिंग पेमेंट, कोई भी रिकरिंग
या फिर नॉन रिकरिंग पेमेंट टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम अ सोर्स अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और स्टेट अदर देन और this whether made directly to the government servant or indirectly through the intermediary fund but does not include मतलब फी का मतलब होता है दैट मीन्स रिकरिंग या नॉन रिकरिंग पेमेंट। ठीक है, फी का मतलब क्या बोल रहे हैं, कोई भी रिकरिंग है या फिर नॉन रिकरिंग पेमेंट है पेमेंट टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम अ सोर्स अदर देन, कहाँ पर, फ्रॉम अ सोर्स, होता है इट इज फ्रॉम अ सोर्स अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, कोई उनको रिकरिंग या रिकरिंग पेमेंट टू गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम अ सोर्स अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया or the consolidated fund of a state or the consolidated fund of a union territory whether made directly to the government servant or indirectly to the intermediary of government but does not include। रुकेगा, बोलते हैं फी का मतलब क्या है, फी मीन्स अ रिकरिंग और नॉन रिकरिंग पेमेंट टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम अ सोर्स अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ओके, ये क्या कहता है आपका, एंड देन इसके बाद है आता है आपका फीस। फीस का मतलब क्या होता है, का ए पार्ट है डायरेक्टली। ठीक है, तो फी का मतलब होता है अ रिकरिंग और नॉन रिकरिंग पेमेंट टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम अ सोर्स अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ अ स्टेट और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ अ यूनियन टेरिटरी whether made directly to government servant or indirectly through the intermediary of a government but does not include but इट डज नॉट इंक्लूड। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ इस पर। फीस का मतलब है कोई भी रिकरिंग या नॉन रिकरिंग पेमेंट, कोई भी आप फीस का मतलब है कोई भी पेमेंट। ठीक है, रिकरिंग होगी बार बार होती होगी या फिर वैसे नॉन रिकरिंग पेमेंट होगी टू गवर्नमेंट फ्रॉम अ सोर्स अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, फीस का मतलब है अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जा रही है आपको। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इट इज अदर देन, इज अदर देन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, या यूनियन टेरिटरी या स्टेट को वेदर मेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट और इनडायरेक्टली थ्रू इंटरमीडिएट गवर्नमेंट। ठीक है, वेदर इट इज मेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू द इंटरमीडिएट गवर्नमेंट। ठीक है, उसको हम फीस बोलते हैं। लेकिन फीस के अंदर क्या क्या नहीं आएगा, अनअर्नड इनकम सच एज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, तो वो जो है दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन फी। ठीक है, तो ये क्या क्या नहीं आएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट दैट इट डज नॉट इंक्लूड एनी अनअर्नड इनकम। ठीक है, कौन सी है, अनअर्नड इनकम, अनअर्नड इनकम, अनअर्नड कह रहा है, अनअर्नड इनकम सच एज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी डिविडेंड्स और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, वो इसके अंदर काउंट नहीं होगा। दूसरा, इनकम फ्रॉम लिटरेरी कल्चरल आर्टिस्टिक साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एफर्ट्स एंड इनकम फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एज एन एमेच्योर, तो वो इसके अंदर फी के अंदर काउंट नहीं होगा। तो फी का मतलब है यहाँ पर कोई भी रिकरिंग या नॉन रिकरिंग पेमेंट टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम अ सोर्स अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू द इंटरमीडियरी ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, थ्रू द इंटरमीडियरी, थ्रू द इंटरमीडियरी ऑफ गवर्नमेंट बट डज नॉट इंक्लूड, किस किस को इंक्लूड नहीं करता है वो यहाँ पर, दैट इज अनअर्न इनकम। जैसे इनकम आपको उनको कोई प्रॉपर्टी से मिलती है, कोई डिविडेंड से अनअर्न इनकम मिल रहा है, जैसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी या डिविडेंड्स या फिर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, वो फीस के अंदर काउंट नहीं होगा। और इनकम फ्रॉम लिटरेरी कल्चरल आर्टिस्टिक साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एफर्ट्स एंड इनकम फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एज एन एमेच्योर, वो भी फी के अंदर काउंट नहीं होगा। फी की डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉरेन सर्विस का मतलब क्या है, means a service in which the government servant receives his pay with the sanction of the government from any source other than consolidated fund of India। ठीक है, यहाँ पर क्या बोलता है, मतलब receives an pay with the sanction of the government, okay, with the sanction of the government from
फ्रॉम किससे? फ्रॉम एनी अदर सोर्स, फ्रॉम एनी अदर सोर्स अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलता है, तो दैट इज कॉल्ड आपका, इनको बोला जाता है आपका दैट इज अ फॉरेन सर्विस। ठीक है। ऑनरेरियम मतलब क्या होता है? ऑनरेरियम मतलब मींस अ रिकरिंग या फिर नॉन रिकरिंग, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है। इट कैन बी रिकरिंग एज वेल एज नॉन रिकरिंग पेमेंट ग्रांटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एज रेम्यूनरेशन फॉर स्पेशल वर्क ऑन ओकेजन और इंटरमिटेंट कैलेंडर। ठीक है। ऑनरेरियम आपको कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है। फॉरेन सर्विस के अंदर आपको विद द सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम एनी सोर्स अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बोलता है। ठीक है, एनी सोर्स अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अदर देन दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बोलता है। और फी का मतलब भी यही बताया, अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। फीस भी जो है वो आपको अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। फॉरेन सर्विस भी जो आपकी अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। ऑनरेरियम फ्रॉम दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आपका। ठीक है, कोई भी रिकरिंग है नॉन रिकरिंग है, फ्रॉम दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलता है आपको ऑनरेरियम। ठीक है। ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ये क्या है आपका? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अपने चार्ज एंड ग्रांट से नहीं देखा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है? पर ये देख लेते हैं यार, क्या है ये आपका? Most important of all governments are revenue received by the government and expenses made by it, excluding the exceptional items as part of consolidated fund of India। ठीक है। ओके, नहीं यहाँ देखा था इसका consolidated fund of India का, that is the most important of all amount they filled is direct or indirect taxes, this direct and indirect taxes loans taken by the Indian government, this fund is filled by direct or indirect taxes loans and taken by the Indian government, returning of loans, interest of loans by the government by any agency। ठीक है, द गवर्नमेंट मीट्स ऑल इट्स एक्सपेंडिचर फ्रॉम दिस फंड, द गवर्नमेंट नीड्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल टू विड्रॉ मनी फ्रॉम दिस फंड। ठीक है। so the provision for this fund is article 266, each state can have its own consolidated fund of और CAG जो है that audit these funds and report to relevant their management। ठीक है। यहाँ पर जो है ऑनरेरियम जो आपको दिया जाता है ना, वो आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया दिया जाता है। फॉरेन सर्विस में जो आप जाते हैं वो अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है। फीस का मतलब होता है जो भी दैट इज अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू इंटरमीडियरी ऑफ गवर्नमेंट होता है, बट डज नॉट इंक्लूड, फीस के अंदर इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई अनअर्नड इनकम है, अनअर्न में आपकी प्रॉपर्टी बढ़ गई, डिविडेंड आपको मिल रहा है कुछ। ठीक है, अनअर्न इनकम सच एज जो ये अभी आपने कमाया नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, लेकिन वो जो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है। और इनकम फ्रॉम लिटरेरी बट डज नॉट इंक्लूड, जैसे इनकम हो रही है आपको कोई लिटरेरी, कल्चरल या आर्टिस्टिक या साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल एफर्ट से। एंड इनकम फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एज एन एमेच्योर, अगर आप कर रहे हैं वहाँ पे, तो भी वो जो है आपका इसके अंदर फीस जो है इंक्लूड नहीं होगा। फीस के अंदर इंक्लूड नहीं होगा ये। ठीक है, वो उसको फीस नहीं बोलेंगे आप। ठीक है, फीस का मतलब होता है कोई भी रिकरिंग नॉन रिकरिंग पेमेंट ऑफ टू गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम अ सोर्स अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ऑनरेडी में आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलता है, मतलब एक तरीके से आप जहाँ से आपकी सैलरी जो है ना वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलती है आपको, तो ऑनरेडियम भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से ही मिलता है। ठीक है। फॉरेन सर्विस में जब आप कहीं चले जाते हो, लेकिन होते तो आप गवर्नमेंट सर्वेंट ही हो, लेकिन आपका अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सिमिलर जो फीस जो होती है ना, वो भी आपको अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ से मिलती है। ठीक है, फीस चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली थ्रू इंटरमीडिएट ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन फीस के अंदर मैं सोच रहा हूँ कि अनअर्नड इनकम है, चलो अनअर्नड इनकम तो समझ में आ गया भाई, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी डिविडेंड वो इसके अंदर नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई लिटरेरी, क्यों लिटरेरी से अगर मिलता है तो गवर्नमेंट थोड़ा दे रही है उसको। लिटरेरी, कल्चर, आर्टिफिशियल, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजी एफर्ट्स अगर आपको मिलकर या पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज मिलती है एज एन एमेच्योर, तो हाँ वो ऑटोमेटिकली अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो गया, और वैसे भी फीस के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा। ठीक है, चलिए। ठीक है, बात करते हैं इसका, ऑनरेरियम हो गया आपके पास। देन ज्वाइनिंग टाइम पे बात करते हैं आपका। ज्वाइनिंग टाइम का मतलब क्या है? देखिए, ज्वाइनिंग टाइम मींस द टाइम अलाउड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट टू जॉइन अ सर्विस और टू ट्रैवल फ्रॉम स्टेशन टू विच ही इज पोस्टेड। ठीक है। फिर बोलता है लीव सैलरी क्या होता है? लीव सैलरी मींस जो उसको लीव के टाइम पे मिलती है, जो उसने लास्ट पे जो ड्रॉ की थी उसी के अकॉर्डिंग, मींस द मंथली अमाउंट पेड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन लीव। ठीक है। लियन का मतलब क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लियन, लियन मतलब होता है, लियन मीन्स, जो लियन है ना, ये इंपॉर्टेंट है लियन वाला। ठीक है, लियन वाला इंपॉर्टेंट है। लियन का मतलब होता है दैट मीन्स द टाइटल ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट टू होल्ड और रेगुलर ऑन रेगुलर बेसिस पे होल्ड करता है वो। ठीक है, लियन। यहाँ पर देख लीजिए आपका लियन का मतलब क्या कहता है। लियन का मतलब क्या होता है? लियन मीन्स द टाइटल ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट टू होल्ड, टू होल्ड ऑन
टाइटल जो है टू होल्ड ऑन रेगुलर बेसिस ईदर इमीडिएटली or on termination of a period of absence a post including a tenure post to which he has been appointed on regular basis or and on which he is not on probation, provided that the title to hold regular post shall be subject to the condition that the juniormost person in the grade will be liable to be reverted to the lower grade the number of persons who are entitled is more than the posts available in that grade. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है लियन का, क्योंकि आई वुड रिक्वेस्ट कि ये तो आपको पता ही होना चाहिए, आई थिंक। यस, हाँ जी, आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा इसमें थोड़ा डीप चलते हैं इसके अंदर। होता लियन का मतलब होता है कोई भी टाइटल अ गवर्नमेंट सर्वेंट होल्ड टू होल्ड ऑन रेगुलर बेसिस पर जो होल्ड करता है लियन, ठीक है। कोई भी टाइटल, ठीक है, ईदर इमीडिएटली और ऑन टर्मिनेशन ऑफ पीरियड पीरियड हाँ, या तो इमीडिएटली वो भी होल्ड कर रहा है, या फिर ऑन टर्मिनेशन ऑफ अ पीरियड, क्या, और पीरियड ऑफ एब्सेंस or a post including a tenure post to which he has been appointed on regular basis and on which he is not on probation, provided that the title to hold a regular post shall be subject to the condition that the junior most, यहाँ पर जो है provided that the title to hold जो है ना आपका, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, that the title to hold a regular post shall be subject to the condition that the junior most जो भी person होगा ना in the grade will be liable to be reverted to the lower grade the number of persons so entitled is more than the posts so available in that grade, तो जूनियर मोस्ट को रिवर्ट कर दिया जाएगा। लियन मीन्स द टाइटल ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट टू होल्ड ऑन रेगुलर बेसिस। जैसे लियन में होता क्या, यूजली आप एक गवर्नमेंट सर्विस कर रहे थे, आपने वहाँ से जो है आप दूसरे कहीं पर चले गए, थ्रू प्रॉपर चैनल आपने अप्लाई किया, आप लियन होल्ड कर रहे हो वहाँ पे, ठीक है। हमें तो अभी तक ये पता है बस। दैट मीन्स द टाइटल ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट टू होल्ड ऑन रेगुलर बेसिस, आप रेगुलर बेसिस पे होल्ड कर रहे हैं लियन, मतलब आप जब तक वहाँ पर हो 2 साल का लियन दिया, जैसे मान लीजिए 2 साल तक आप कभी भी वापस जा सकते हो, इधर इमीडिएटली जा सकते हो या फिर टर्मिनेशन ऑफ अ पीरियड, ठीक है, उस पीरियड के दौरान जा सकते हो, टर्मिनेशन ऑफ पीरियड, और पीरियड ऑफ एब्सेंस में जा सकते हो। अ पोस्ट इंक्लूडिंग अ टेन्योर पोस्ट, और इसके अंदर ये इंक्लूड करता है किसको, दैट इंक्लूड्स अ टेन्योर पोस्ट, इंक्लूडिंग अ टेन्योर पोस्ट, ठीक है, टू विच ही हैज बीन अपॉइंटेड ऑन रेगुलर बेसिस एंड ऑन विच ही इज नॉट ऑन प्रोबेशन, ठीक है, और जिसके अंदर वो ही हैज बीन अपॉइंटेड ऑन रेगुलर बेसिस पे वहाँ पर उनका वो हो गया है, एंड ऑन विच ही इज नॉट ऑन प्रोबेशन, और जहाँ पर जो है ऑन विच ही इज नॉट ऑन प्रोबेशन, वहाँ पर जो है प्रोबेशन पे नहीं है वो, ठीक है। So provided that the title to hold a regular post shall be subject to the condition that the junior most person joining the grade will be liable to be reverted to the lower grade if the person so entitled is more than the post available in that grade, ठीक है। चलिए थोड़ा थोड़ा इसके बारे में अभी और आगे पढ़ेंगे तो इट विल बी क्लियर। बोलते हैं लियन रिप्रेजेंट्स ओनली द राइट और टाइटल ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट टू होल्ड अ रेगुलर पोस्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ लियन एज द टाइटल ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट टू होल्ड सब्सटेंटिवली अ परमानेंट पोस्ट विल अंडरगो अ चेंज। लियन विल नाउ रिप्रेजेंट ओनली द राइट, ठीक है। पहले क्या था, concept of lien as the title of government to hold substantively a permanent post will undergo a change. Lien will now represent only the right or the title of a government servant to hold a regular post, whether permanent or temporary, either immediately or on termination of the period of absence. The benefits of having a lien in the grade will thus be enjoyed by all officers who are confirmed in the grade of entry or who have been promoted to a higher post declared as having completed the probation where it is prescribed, or those who have been promoted on a regular basis to a higher post where no probation is under the case may be. The above right title will, however, be subject to the condition that the junior most person in the grade will be liable to be reverted to the lower grade if any time the number of persons so entitled is more than the posts available in that grade. For example, if a person who is confirmed or whose probation in a higher post has been declared, कोई भी एक पर्सन है हु इज कंफर्म है वो, और whose probation जो है in a higher post has been declared and as having been completed, or one who is holding a higher post for which there is no probation on regular basis reverts from deputation or foreign service, and if there is no vacancy in that grade to the accommodate him, the junior most person will be reverted. If however this officer himself is the junior most, he will be reverted to the next lower grade from which he was earlier promoted. So he will be reverted to the next lower grade from which he was earlier promoted, ठीक है। okay. ठीक है, कुछ कुछ तो समझ में आया है यहाँ पर। बोलता है एग्जाम्पल दे रखा है, एक अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर पढ़ सकते हैं। that if a person who is confirmed or whose probation in the higher post has been declared as having been completed, अगर जो कंफर्म हो गया है वो वहाँ पर, या फिर जिनकी जो प्रोबेशन जो है ना वहाँ पर डिक्लेयर कर दी गई है एज हैविंग बीन completed, एंड वन इज होल्डिंग अ हायर पोस्ट, देयर इज नो प्रोबेशन, और कोई भी अगर मान लीजिए कोई हायर पोस्ट होल्ड कर रहा है एंड देयर इज नो प्रोबेशन ऑन रेगुलर बेसिस,
और अगर वहाँ से वो रिवर्ट करते हैं, ठीक है, रिवर्ट फ्रॉम द डेपुटेशन एंड इफ देयर इज नो वैकेंसी इन दैट ग्रेड, no vacancy in that grade to accommodate him, the junior most person he will be reverted. If however this officer himself is, अगर वही सबसे junior most है तो he will be reverted to the next lower grade from which he was earlier promoted. अगर वही सबसे junior most officer है, if however this officer himself is the junior most, he will be reverted to the next lower grade from which he was earlier promoted. ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ समझ में आ रहा है. The concept of lien as title of government in 247, lien will now represent that lien जो है will now be the right or title of a government servant to hold a regular post, permanent or temporary, either immediately or on termination of the benefits of having lien will be enjoyed by who are confirmed in the grade of entry or who have been promoted to a higher post declared as having completed the probation where it is prescribed to those who have been promoted. ठीक है, तो लियन का क्या बोलता है, लियन जो है फर 9 में बोलता है, 13 में क्या बोलता है, इट रिप्रेजेंट्स द right of a government employee to hold a regular post, whether permanent or temporary, either immediately or on termination of the period of absence. The benefit of having leave in a post in the country is enjoyed by all employees who are confirmed in the post service cadre of entry or who have been promoted to a higher post declared as having completed the probation where it is prescribed. It is also available to those who have been promoted on a regular basis to a higher post where no probation is prescribed under these case with above. The above right will, however, be subject to the condition that the junior most person in the cadre will be liable to be reverted. Okay, if any time the person is entitled to more than the subject of person in the cadre. Lien of a post, government servant जो है who has acquired a lien on a post retains a lien on that post. A government servant who has acquired a lien, जिसने भी lien लिया है, has acquired lien on a post retains a lien on that post while performing the duties of that post, while on foreign service or holding a temporary post or officiating in another post during joining time on transfer to another post unless he is transferred substantively to a post or on lower pay, in which case his lien is transferred to the new post from the date on which he is relieved of his duties in the old post while on leave, while under suspension. A government servant on acquiring a lien on a post will cease to hold any lien previously acquired on any other post after appointment in central government. ठीक है, ट्रांसफर ऑफ लियन. तो ये वाला पॉइंट तो आपको समझ में आ ही गया है, ये फिर भी पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है आपका. Lien is defined as the right of a government servant to hold the right of a government servant basically to hold regular post, hold की वो hold regular post hold कर रहे हैं, whether the permanent or temporary, either immediately or on termination of the period, whether जो है permanent or temporary, either immediately or on termination of the period of absence. The benefit of having lien post is enjoyed by all employees who are confirmed. किसके द्वारा किया जाता है ये जो benefit है ना, enjoyed who are confirmed in the post service cadre who have been promoted to a higher post or have been promoted to a higher post declared as having been completed probation when it is presented, also available to those who have been promoted on regular basis. बस ये कहें, अब right जो will however be subject to the condition that the most person in the cadre will be liable to be reverted to the lower post anytime the number of persons who entitled is more than the post available in that cadre. ठीक है, lien on a post. A government servant who has acquired a lien on a post retains a lien on that post. क्या करता है, रिटेन करता है lien on that post while performing the duties of that post. A government servant who has acquired a lien, जिसने lien ले रखा on a post, retains a lien on that post while performing the duties of that post, while on foreign service or holding a temporary post or officiating in another post during joining time or on transfer to another post, unless he is transferred substantively to a post on lower pay, in which case his lien is transferred to the new post from the date on which he is relieved of his duties in the old post while on leave. ठीक है, and while under suspension also. So he holds a lien while on leave also and while under suspension also, while performing the duties of that post, while on foreign service or while during joining time on transfer. ठीक है, a government acquired lien post will cease to hold any lien previously acquired on a government servant. क्या होता है, government servant on acquiring a lien on a post will cease to hold any lien previously acquired on any other post. ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ लियन को होता है गवर्नमेंट सर्वेंट लियन क्या कहता है, लियन ऑन अ पोस्ट में इन नो सर्कमस्टेंसेस बी टर्मिनेटेड इवन विद हिज कंसेंट इफ द रिजल्ट
will be to leave him without a lien upon a permanent post unless his lien is transferred. A government servant holding suddenly a permanent post retains lien on that post. It will not be correct to deny a government servant lien to a post he was holding substantially on the plea that he had not requested for retention of lien. Okay? While submitting his technical resignation or to relieve such a with the condition that no lien will be retained. Government employee lien on post shall stand terminal loan is acquiring a lien on a permanent post, whether under this outside the quarter on which he is born. No lien shall be retained where a government servant has proceeded on immediate absorption. वहाँ पर जहाँ नहीं मिलेगी आपको नो लियन विल बी रिटेन्ड. कहाँ पर नहीं होगा? गवर्नमेंट सर्वेंट है, he has proceeded on immediate absorption basis to a post or service outside his career or on a foreign service deputation in the maximum limit admissible under the order of the government of India from time to time. Transfer of lien, whether the lien of a government servant who is not performing the duties of the post to which the lien pertains can be transferred to another post in the same quarter subject to the provision of Fundamental 15. बोलता है the lien of a government servant who is not performing the duties of a post to which the lien pertains can be transferred to another post in the same quarter. यहाँ पर लोकल फंड की बात करता है. यहाँ पर लोकल फंड क्या होता है? लोकल फंड इंपॉर्टेंट है आपका. That means revenues administered by bodies which by law or rule having the force of law come under the control of government, whether in regard to proceeding generally or to specific matters such as the sanctioning of their budgets, sanction to the creation or filling up of a particular post, or the enactment of leave, pension or similar rules. Local fund मतलब revenues administered by bodies which by law or rule having the force of law come under the control of government, actually come under the control of government, whether in regard to proceedings generally or to specific matter which as the sanctioning of their budgets, sanction of the creation of filling up of a particular post, or to enactment pension or similar rules. The revenues of any body which may be specially notified by the president as such. लोकल फंड, लोकल फंड का मतलब क्या होता है? लोकल फंड का मतलब है यहाँ पर रेवेन्यूज एडमिनिस्टर्ड बाय बॉडीज, जो भी रेवेन्यू है. लोकल फंड का मतलब जो भी रेवेन्यू आ रहा है आपके पास, रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है, रेवेन्यू administered by bodies which by law or rule having the force of law come under the control of government, whether in regard to proceeding general or specific matters such as sanctioning of their budgets, sanction of creation or filling up of particular post, the enactment of leave, pension or similar to local fund बोलते हैं. Means the revenue administered by bodies which by law or rule having the force of law come under the control of government. They come under the control of the government, whether in regard to proceeding general or specific matters. Okay, whether जो है whether in regard to proceeding generally or to specific matters such as the sanctioning of their budgets, sanctions to the creation or filling up of their particular post, or the enactment of leave, pension or similar rules. The revenues of any bodies which may be specially notified by the president as such, तो वो भी जो है इसके अंडर में आ जाएगा, लोकल फंड के अंदर में होता है. The revenues जो हैं जिनके जो है ना of such bodies specially notified by the president as such. लोकल फंड हो गया वो आपका. बोलता है मिलिट्री कमीशन ऑफिसर मीन्स कमीशन ऑफिसर हो, डिपार्टमेंट कमीशन ऑफिसर या फिर कमीशन इंडियन मेडिकल डिपार्टमेंट. यहाँ पे मिलिट्री कमीशन ऑफिसर कौन हो गया? तो इंडियन मिलिट्री मेडिकल डिपार्टमेंट से हो गया, और डिपार्टमेंट का कोई भी डिपार्टमेंटल कमीशन ऑफिसर हो गया, ठीक है. इट डज नॉट इंक्लूड अ वारंट ऑफिसर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मिलिट्री, हाँ, वारंट ऑफिसर नहीं होते. मिलिट्री ऑफिसर का मतलब क्या होता है? फॉलोइंग विद द डेफिनेशन मिलिट्री कमीशन ऑफिसर इन दिस in sub clause 1 or 2 of clause A above as per warrant or any warrant officer. मिलिट्री ऑफिसर के अंदर यहाँ पर एनी वारंट ऑफिसर आ गया. मिलिट्री ऑफिसर जो है ये वारंट ऑफिसर भी आ जाएगा. और जो मिलिट्री कमीशन ऑफिसर है इसके अंदर जो है बोलता है इट डज नॉट इंक्लूड अ वारंट ऑफिसर, बट इसके अंदर ही आता है मिनिस्ट्रियल सर्वेंट मीन्स गवर्नमेंट सर्वेंट और ऑफ अ सबऑर्डिनेट सर्विस हुज ड्यूटीज आर एंटायरली क्लरिकल वाला जो है उसका बोलता है entirely clerical, and any of the government servants will defined in the month means a calendar month, including period explained in a month of days compared with the days on which is in the odd number of days calculated. ठीक है. मंथ का मतलब क्या बोलता है? मंथ मतलब कैलेंडर मंथ का मतलब होता है. इट इज कैलकुलेटिंग अ पीरियड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मंथ एंड डेज. complete calendar month irrespective of the number of days in each should first be calculated in the odd number of days in the 3 month 20 days and days.
ऑफिशिएट मतलब क्या था? अ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफिशिएट इन अ पोस्ट व्हेन ही परफॉर्म्स द ड्यूटीज ऑफ द पोस्ट ऑन व्हिच अनदर पर्सन होल्ड्स अ लियन on which another person holds a lien. The central government may, if things fit, appoint a government servant to officiate in a if things fit, appoint a government servant to officiate in a vacant post on which no other government servant holds a lien. ठीक है, ऑफिशिएट का मतलब होता है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है, ये कुछ डेफिनेशन है ना, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, और 9 के अंदर काफ़ी वो दे रखा है आपका, तो ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज कुछ क्वेश्चन जो है आ रखे हैं, इंपॉर्टेंट बन जाता है ऑटोमेटिकली। ऑफिशिएट मतलब होता है गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफिशिएट्स इन अ पोस्ट व्हेन ही परफॉर्म्स द ड्यूटी, तो मतलब होता है व्हेन गवर्नमेंट सर्वेंट जो है व्हेन परफॉर्म्स द ड्यूटीज ऑफ अ पोस्ट, ठीक है, ऑन विच अनदर गवर्नमेंट होल्ड अ लियन, ठीक है, तो बोलते हैं ऑफिशिएट। सेंट्रल गवर्नमेंट में इफ थिंग्स फिट अपॉइंट अ गवर्नमेंट सर्वेंट इन अ वैकेंट पोस्ट ऑन विच नो अदर गवर्नमेंट सर्वेंट होल्ड्स अ लियन, ठीक है, तो बोलता है दिस सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मे इफ थिंग्स फिट अपॉइंट गवर्नमेंट ऑन विच नो अदर पोस्ट जो है अदर गवर्नमेंट सर्वेंट और होल्ड्स अ लियन, ठीक है। तो बोलता है आपका ओवरसीज पे क्या होती है? ओवरसीज पे में ग्रांटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट कंसीडर द फैक्ट दैट ही इज सर्विंग कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ हिज डोमिसाइल, ठीक है, जो है सर्विंग अदर देन द कंट्री ऑफ हिज डोमिसाइल। पे का मतलब क्या होता है? पे मतलब द अमाउंट ड्रॉन बाय अ मंथली गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, बाय अ गवर्नमेंट सर्वेंट एज द पे अदर देन स्पेशल पे और पे ग्रांटेड इन व्यू ऑफ हिज पर्सनल क्वालिफिकेशन व्हिच हैज बीन sanctioned for a post held by him substantively or in official capacity or which he is entitled by reason of his position in the cadre. Overseas pay, special pay and personal pay आती है इसके अंदर, और any other emolument which may be specially classed by the president, ठीक है। यहाँ पर पे का मतलब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पे का मतलब क्या है यहाँ पर? पे का मतलब अमाउंट ड्रॉन मंथली बाय गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, बाय गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। पे अदर देन बोलता है अदर देन स्पेशल पे और पे ग्रांटेड इन व्यू ऑफ हिज पर्सनल पे ग्रांटेड इन व्यू ऑफ हिज पर्सनल क्वालिफिकेशंस, उसके अलावा sanction for which has been sanctioned for a post held by him substantively or in official capacity to or which he is entitled by reason of his position in the cadre, ठीक है। फिर बोलते हैं ओवरसीज पे, स्पेशल पे और पर्सनल पे। पे मीन्स द अमाउंट ड्रॉन मंथली बाय गवर्नमेंट सर्वेंट एज द ओवरसीज पे, स्पेशल पे और पर्सनल पे। ये यहाँ पर बोलता है पे मीन्स
पे का मतलब है, पे का मतलब दैट इज द अमाउंट ड्रॉन बाय अ मंथली गवर्नमेंट सर्वेंट एज द पे अदर देन स्पेशल पे और पे ग्रांटेड इन व्यू ऑफ हिज पर्सनल क्वालिफिकेशन। मतलब स्पेशल पे को हटा दीजिए और जो भी पे है जो ग्रांटेड इन व्यू ऑफ हिज पर्सनल क्वालिफिकेशन वो हटा दीजिए, विच हैज बीन सैंक्शन फॉर अ पोस्ट हेल्ड बाय हिम सब्सटेंटिवली और which to which he is entitled by reason of his position in the cadre। ठीक है, अब यहाँ पर फिर यहाँ पर जब ये ऊपर अगर ये अदर देन स्पेशल पे और कह रहे हैं और other than वो कह रहे हैं, तो यहाँ पर इन्होंने स्पेशल पे क्यों लिखा फिर यहाँ पे? अब ये यानी यहाँ पर पे का मतलब जो है, यहाँ पर ये पे का मतलब ओवरसीज पे भी और स्पेशल पे भी और पर्सनल पे भी, ये यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं फिर आपको? और एनी अदर इमोल्यूमेंट्स व्हिच मे बी स्पेशली क्लास एज पे बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, वो तो समझ में आता है, जो प्रेसिडेंट ने खुद बोल दिया अपनी तरफ से कोई भी इमोल्यूमेंट जो है स्पेशली क्लास एज प्रेसिडेंट। ठीक है, तो वो तो समझ में आ गया। पर जब ऊपर आप पे में से हटा रहे हैं कि अदर देन स्पेशल पे और पे ग्रांड इन व्यू ऑफ क्वालिफिकेशन व्हिच हैज बीन सैंक्शन्ड फॉर अ पोस्ट, उस टाइम पर जब आप वो पोस्ट होल्ड कर रहे हो ना आप एडवाइस कैपेसिटी टू व्हिच इज एंटाइटल्ड, तो उसको हम पे बोलेंगे द पे which has been sanctioned, the pay which has been sanctioned for a post held by him, तो बोलेंगे उस टाइम पर वही होगी। फिर ओवरसीज पे भी एक पे होती है, ठीक है, स्पेशल पे भी आपकी पे होगी और पर्सनल पे भी आपकी पे होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पेशल पे अगर आपसे कोई पूछेगी भाई व्हाट मीन बाय स्पेशल पे, पर्सनल पे क्या होता है? अच्छा चलिए दे रखा है इसके अंदर, हम देख लेते हैं एक बार इसके अंदर क्या है आपका पे का मतलब। पे का मतलब क्या है? जैसे कोई भी स्पेशल पे, कोई भी पे जो उसको अब उसकी वजह से मिल रही है, आप जिस भी आप ऑफिशियल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं वो पे हो गया है। ठीक है, ओवरसीज पे भी क्योंकि आप बाहर काम कर रहे हो तो वो भी पे के अंदर आ गया। स्पेशल पे देखते हैं क्या है। स्पेशल पे का मतलब है यहाँ पर स्पेशल पे मीन्स इन एन एडिशन ऑफ द नेचर ऑफ पे टू द emoluments of a post of a government servant granted in consideration of the specially arduous nature of the pay, okay, or a specific addition or work of this। ठीक है, for orders regarding grant of special pay in the name of deputation duty allowance to the transfer of central government other government company, ठीक है जी। यहाँ पर मतलब फॉर ऑर्डर्स रिगार्डिंग ग्रांट ऑफ स्पेशल पे टू वेरियस कैटेगरीज ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड ट्रीटमेंट देयरऑफ फॉर द पर्पस ऑफ फिक्सेशन ऑफ पे एंड प्रमोशन दिस एंड फॉर ऑर्डर्स रिगार्डिंग ग्रांट ऑफ स्पेशल पे इन द नेम ऑफ डेपुटेशन ड्यूटी। मान लीजिए किसी डेपुटेशन ड्यूटी अलाउंस हो गई, डेपुटेशन ड्यूटी अलाउंस हो गया तो वो स्पेशल पे हो गया, ट्रांसफर ऑफ सेटलमेंट टू अदर। ठीक है, और स्पेंड टू वेरियस कैटेगरीज ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड ट्रीटमेंट देयरऑफ फिक्सेशन ऑफ पे एंड प्रमोशन। ठीक है, तो इसमें जैसे आपको मान लीजिए डेपुटेशन पे कोई डेपुटेशन अलाउंस मिल रहा है तो वो स्पेशल पे ही तो हुई आपकी। यस, स्पेशल के पे का मतलब आपने आपको मिल गया। चलिए, तो यहाँ पर आपका स्पेशल पे का मतलब मान लीजिए आप आपने माना इसका कोई भी जैसे डेपुटेशन पर हो गया आपका, डेपुटेशन अलाउंस हो गया जैसे। ठीक है, तो स्पेशल पे का मतलब क्या है? मीन्स एन एडिशन, क्या मिलता है आपको? एन एडिशन ऑफ द नेचर ऑफ द पे एमोलमेंट ऑफ ग्रांटेड इन कंसिडरेशन ऑफ दी, कोई भी स्पेशली आर्डुअस नेचर का कोई ड्यूटी करते हैं आप वो, या फिर और इन एडिशन स्पेसिफिक एडिशन टू द वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ऐड हो जाता है तो मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल में आपने दे दिया ये वाला कि भाई जैसे स्पेशल पे आपने मान लिया आपका डेपुटेशन अलाउंस, वो भी आपका इस तरीके से होगा। ठीक है, चलिए आगे समझ में। फिर बोलता है पर्सनल पे। पर्सनल पे मतलब होता है मीन्स एन एडिशनल, पर्सनल पे भी आपका एडिशनल पे होता है। जी हाँ, मीन्स एन एडिशनल पे ग्रांटेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ओके, टू सेव हिम फ्रॉम लॉस ऑफ सब्सटेंटिव पे इन रिस्पेक्ट ऑफ अ परमानेंट पोस्ट अदर देन टेन्योर पोस्ट ड्यू टू रिविजन ऑफ पे और टू एनी रिडक्शन ऑफ सब्सटेंटिव पे अदरवाइज देन एज ए डिसिप्लिन मेजर। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर क्या बोलता है जैसे कि मान लीजिए आप आपसे बात करें in case of grant in separation of all previous matter it has been decided that all cases which is proposed to grant personal pay under fundamental rules may be referred through the no case will be under which is not entirely exception character। जैसे आपको मान लीजिए हिंदी पर्सनल पेज आपको दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपका एक एग्जांपल लेते हैं आप इसमें, दैट इज हिंदी, हिंदी की तरफ से आपको कुछ पर्सनल पे मिल रहा था। ठीक है, तो कहता है टू सेव हिम फ्रॉम लॉस ऑफ सब्सटेंटिव पे। ठीक है, जो आप होल्ड करे थे ना, ठीक है, टू सेव हिम फ्रॉम द लॉस ऑफ सब्सटेंटिव पे इन रिस्पेक्ट ऑफ अ परमानेंट पोस्ट अदर देन टेन्योर पोस्ट। ठीक है, आपको कोई इस तरीके से मान लीजिए हिंदी डिपार्टमेंट जहाँ जहाँ आपको कुछ अलग से मिल रहा है, ठीक है, अदर देन अ टेन्योर पोस्ट ड्यू टू रिविजन ऑफ पे और रिडक्शन ऑफ सच सब्सटेंटिव पे अदरवाइज देन एज ए डिसिप्लिन। ठीक है, अदर देन अ टेन्योर पोस्ट, ठीक है, ड्यू टू रिविजन ऑफ पे या फिर और टू एनी रिडक्शन ऑफ सच सब्सटेंटिव पे और अदरवाइज देन एज ए डिसिप्लिन एक्शन, अदरवाइज
एज अ डिसिप्लिन होता तो वो होता है इन एक्सेप्शन ऑन अदर पर्सनल कंसिडरेशन भी पर्सनल पे होता है, जैसे कि ये आपको मिलता है, ठीक है। अब बात करता है आपका तो यहाँ पर आ गया आपका, तो ओवरसीज भी आ गया, स्पेशल पे भी आ गया, पर्सनल पे भी आ गया। यहाँ पर पर्सनल पे में आपके अलग हो गए, जैसे मान लीजिए हिंदी, आप हिंदी उसमें थे, मान लीजिए हिंदी सेक्शन में, या हिंदी आप टाइपिस्ट है, उसकी तरफ से कुछ हिंदी पर्सनल पे में मिलती है मान लीजिए आपको, तो आपको पर्सनल पे हो गया, ठीक है। और एनी अदर इमोलमेंट्स विच में भी स्पेशली क्लास बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, तो वो आपका पे के अंदर आया था, ठीक है। ये जो एनपीए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लीजिए इसका। इसका क्या है, एनपीए इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडल अदर देन द पोस्ट इंक्लूडेड इन सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज। ये क्या है एनपीए, थोड़ा सा आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो पे का मतलब समझ में आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं एनपीए, ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, एनपीए देख लीजिए। इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल पोस्ट अदर देन द पोस्ट इंक्लूडेड इन द सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज रिकमेंडेशन है, ठीक है। रिगार्डिंग द एग्जिस्टिंग रेट्स ऑफ एनपीए एडमिसिबल टू मेडिकल पोस्ट अदर देन द पोस्ट इंक्लूडेड इन सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज एंड टू से दैट क्या बोलते हैं इसमें, रेट्स ऑफ अलाउंसेस एक्सेप्ट बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन, वो रिकमेंडेशन this, no NPS contained this shall now be paid at 20% of the basic pay in the revised pay. Okay, क्या बोलता है आपका नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस के बारे में, आपको क्या कहता है आपका, that NPA shall now be paid at 20% of the basic pay in the revised pay. Now paid at the rate of 20%, at the rate of 20% of the basic pay in the revised pay structure in vogue based on the recommendation and convention, subject to the condition that this, does not exceed to the condition that the sum जो है of basic और NPA जो है does not exceed 2,37,500, ठीक है। The following condition shall be on the term basic pay in the revised pay structure shall mean basic pay as defined in this, ठीक है, and the NPA shall continue to utilize pay for the purpose of computation of DN अनुसार। इसके अलावा तो यहाँ पर जो आपका NP है that shall continue to utilize pay for the purpose of computation of DNS allowance and other allowances except those allowances in respect on which otherwise including calculation of retirement benefits except those allowances in respect of which the applicable orders provide otherwise, including uh, including calculation of retirement benefits. ठीक है, retirement allowance under these orders shall mean dearness allowance as sanctioned by the central government from time to in the 7th pay commission. NPA will continue to be restricted to those medical posts for which medical qualifications under the IMA have been prescribed as an essential qualification. Okay? They shall continue to be restricted to those medical posts for which medical qualifications recognized under the IMA have been prescribed as an essential component. The post is a clinical, the following conditions will be fulfilled as it clinical one होना चाहिए, is a clinical one, is a whole time post and ample scope for private practice, necessary to prohibit private practice in the public interest. ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका। फिर हम बात करते हैं आपका परमानेंट पोस्ट मींस अ पोस्ट कैरिंग अ डेफिनेट रेट ऑफ पे।
सैंक्शन विदाउट लिमिट ऑफ टाइम। परमानेंट पोस्ट मतलब पोस्ट जो है carrying a carrying a definite rate of pay sanction without limit of time, ठीक है। then we have स्पेशल पे हो गया हमारा। फिर बोलता है प्रेजेंटिव पे ऑफ अ पोस्ट। प्रेजेंटिव पे क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। when used with reference to any particular government servant means the pay to which he would be entitled if he held, means the pay to which he would be entitled if he had held the post substantively and were performing its duties, but it does not include, कहता है but it does not include special pay unless the government servant performing the duties in the government pay special pay or sanction, does not include special pay, but it does not include special pay, okay, unless the government servant performs or discharges the work or responsibility in consideration of special pay or sanction, ठीक है। presumptive pay of post मतलब अभी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, the pay to which he would be entitled if he held the post substantively, अगर वो है तो presumptive pay of post बोलते हैं, ठीक है। and were performing duties, but it does not include special pay unless the government servant or discharge the work in consideration of special pay or sanction। देन हम आगे बात करते हैं आपका सब्सिस्टेंस ग्रांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका आया भी है सब्सिस्टेंस ग्रांट के ऊपर, ठीक है। मीन्स अ ग्रांट मेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज नॉट इन रिसीट ऑफ पे और लीव सैलरी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्पेशली आपका सस्पेंशन पर होता है जब मिलता है। अब मंथली ग्रांट, दैट्स बेसिकली अ मंथली ग्रांट मेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज नॉट इन रिसीट ऑफ पे और लीव सैलरी, जब उसको नहीं मिल रही होती तब उसको सब्सिस्टेंस ग्रांट क्या बोलता है आपका सब्सिस्टेंस सब्सटेंटिव पे। तो आपको जो पे के अकॉर्डिंग मिलती है आपको, जिसमें आप वो करते हैं वो सब्सटेंटिव पे होता है। द पे अदर देन स्पेशल पे, ओके, अदर देन स्पेशल पे है पर्सनल पे और एमोल्यूमेंट्स क्लास और एमोल्यूमेंट्स क्लास्ड एज पे बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। उनमें अंडर आर्टिकल 21A(3) the government service is entitled on account of a post to which he has been appointed substantively or by reason of his substantive position in the charter, ठीक है। तो बोलता है मीन्स द पे अदर देन स्पेशल पे, पर्सनल पे और एमोल्यूमेंट क्लास एज अदर देन स्पेशल पे बोलता है। यहाँ पर पर्सनल पे मीन्स द पे अदर देन स्पेशल पे, ठीक है। अगर फिर स्टॉप, पर्सनल पे और एमोल्यूमेंट क्लास एज पे बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, to which the government servant is entitled on account of a post to which he has been appointed suddenly or by reason of substantive position in a cadre. In the case of a peace worker in a government servant of India, presses when appointed to a post on time scale, substantive pay shall be deemed to be equivalent to 200 times his hourly class rate. In case of a person, देखिए पे हो गया आपका, स्पेशल पे आ गया आपका, सब्सटेंटिव पे हो गया। बोलते हैं इन केस ऑफ अ peace worker in the government of India, in the government of India presses when appointed to a post on a time scale, substantive pay shall be deemed to be equivalent or to 200 times his hourly class rate. In the case of a person with lien on a permanent post under a state government, substantive pay means the substantive pay is defined in the relevant rules of state government, ठीक है। ये वाला थोड़ा नोट वन समझ में नहीं आया। इन द केस ऑफ अ पीस वर्कर की बात कर रहा है वहाँ पर, इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेसेस में, ठीक है। व्हेन अपॉइंटेड टू अ पोस्ट ऑन अ टाइम स्केल, किसी टाइम स्केल के बाद जो किसी को पोस्ट कर दिया, तो सब्सटेंटिव पे जो होगी ना इनकी, इसमें जो इनकी सब्सटेंटिव पे होगी, shall be deemed to be equivalent to 200 times his hourly class rates, ठीक है। ओके, समझ में नहीं आया लेकिन थोड़ा सा बस रीड कर लीजिए तो बाकी, ठीक है। इन द केस ऑफ अ पर्सन विद लियन ऑन अ परमानेंट पोस्ट अंडर स्टेट गवर्नमेंट, सब्सटेंटिव पे मींस द पे एज डिफाइंड इन द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट कंसर्न, ठीक है। टेम्पररी पोस्ट मतलब मींस अ पोस्ट कैरिंग अ डेफिनेट रेट ऑफ पे सैंक्शन फॉर अ लिमिटेड टाइम, ठीक है। टेम्पररी पोस्ट मतलब क्या है, कोई भी जो मींस अ कैरी अ पोस्ट जो है, अ पोस्ट कैरिंग अ डेफिनेट रेट ऑफ पे सैंक्शन फॉर अ लिमिटेड टाइम, मतलब कोई भी एक पोस्ट है, मींस अ पोस्ट कैरिंग अ डेफिनेट रेट ऑफ पे सैंक्शन फॉर अ लिमिटेड टाइम, सैंक्शन फॉर अ लिमिटेड टाइम। टेम्पररी पोस्ट का मतलब होता है मींस अ पोस्ट कैरिंग अ डेफिनेट रेट ऑफ पे, कैरिंग अ डेफिनेट रेट ऑफ पे सैंक्शन फॉर अ लिमिटेड टाइम। टेम्पररी पोस्ट मतलब मींस अ पोस्ट कैरिंग अ डेफिनेट रेट ऑफ पे, डेफिनेट फिक्स होता है हाँ, लिमिटेड टाइम के लिए होता है, ठीक है। टेन्योर पोस्ट का मतलब क्या होता है,
टेन्योर पोस्ट होता है, मतलब यहाँ पर वो परमानेंट पोस्ट होती है टेन्योर पोस्ट, विच एन इंडिविजुअल गवर्नमेंट सर्वेंट मे नॉट होल्ड फॉर मोर देन ए लिमिटेड टाइम, ठीक है। परमानेंट पोस्ट है एंड ही मे नॉट होल्ड फॉर मोर देन ए लिमिटेड पीरियड, ठीक है। इन केस ऑफ डाउट नॉट गवर्नमेंट सर्वेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड, ठीक है। टाइम स्केल पे का मतलब क्या होता है आपका, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है यार, बिकॉज अगर अनलेस यू नो दिस तो पता ही नहीं चल पाएगा कि क्या आगे चल रही है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। ओके, देन वी मूव टू नेक्स्ट वन। इट इज टाइम स्केल पे। टाइम स्केल पे ऊपर देखें हम, टाइम स्केल पे था मीन्स व्हेन सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड इन दीज रूल्स rises by periodical increments from a minimum to a maximum. It includes the class of pay hitherto known as progressive. Okay, टाइम स्केल पे मतलब होता है मीन सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड इन दीज रूल्स राइजेज, it rises by periodical increments from a minimum to a maximum. Okay, and includes the class of pay hitherto known as progressive. Okay, class of pay. Okay, time scales are said to be identical if the minimum maximum period of increment and the rate of increment of the are identical. क्या बोलता है, टाइम स्केल आर सेट टू बी आइडेंटिकल इफ द मिनिमम, द मैक्सिमम, the period of increment and the rate of increment of time scale are identical. The period of increment and the rate of increment of time scales are identical. Okay, post is said to be on the same time scale as another post on a time scale if the two time scales are identical and the post fall within a cadre or a class in a cadre. Such cadre or class having been created in order to fill all post and duties of the same character or degree in a service or establishment, a group of establishment. So the pay of the holder or any particular post is determined by his position in the cadre and class and not by the fact that he holds that post. Yeah. Time scale पे क्या होता है मीन्स अ पे विच इज सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन rises by periodical increment, time scale पे, okay, from a minimum to a maximum. It in the class of pay is known as progressive. Time scale are said to be identical, इनको बोला जाता है they are said to be identical if the minimum and the maximum, the minimum, the maximum, the period of increment and the rate of increment of the time scale are identical. Opposite is said to be same, ठीक है, are said to be identical. A post is said to be identical बोलता है, a post is said to be on the same time scale as another post on a time scale if two time scales are identical. The two time scales are identical and the post fall within a quarter. आगे बोलता है आपका ट्रैवलिंग अलाउंस, क्या बोलता है आपका ट्रैवलिंग अलाउंस मीन्स एन अलाउंस ग्रांटेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट टू कवर द एक्सपेंसेस व्हेन ही इनकर्स इन ट्रैवलिंग, ठीक है। हाँ, जो टू कवर द एक्सपेंसेस विच ही इनकर्स इन ट्रैवलिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट में जो भी करता है ना वो, इफ इंक्लूड्स ग्रांट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कन्वेंस हॉर्स टेंट्स, ठीक है, इंक्लूड्स मेंटेनेंस ऑफ कन्वेंसेस हॉर्स एंड टेंट्स वगैरह, ठीक है। टाइम स्केल में मतलब अ पोस्ट इज सेट टू बी ऑन सेम टाइम स्केल एज अनदर पोस्ट ऑन अ टाइम स्केल इफ द टू सेम्स आर आइडेंटिकल। उनको जब सेम बोला जाएगा जब वो जो है टाइम स्केल में, इफ द टू सेम्स आर आइडेंटिकल एंड द पोस्ट फॉल विद इन द सेम कार्टर, उसमें कंडीशन भी है आइडेंटिकल, और जो पोस्ट जो है ना फॉल विद इन अ सेम कार्टर और अ क्लास इन अ कार्टर और सच कार्टर और क्लास हैविंग बीन क्रिएटेड इन ऑर्डर टू फिल द पोस्ट इन्वॉल्विंग ड्यूटीज ऑफ or it involving duties of approximately the same character or degree of responsibility in a service or establishment or group of organizations, so that the pay of the holder of any particular post is determined so that the pay of the holder of any particular post is determined by his position in the cadre or class, not by fact that he holds this post, ठीक है। ये जी राउंड ये होगा आपका। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट वन, ये बोलता है आपका पार्ट 10 बोलता है इसमें, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, अच्छा है आपका। तो बोलते हैं एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय दिस रूल नो पर्सन मे बी अपॉइंटेड इन इंडिया टू अ पोस्ट इन गवर्नमेंट सर्विस विदाउट अ मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सेप्ट बोल रखा है वो ठीक है, अदरवाइज जो है आपको नो गवर्नमेंट सर्विस मे बी अपॉइंटेड टू दिस विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट मे मेक रूल्स prescribing the form in which medical certificate should be prepared and the particular medical or other officers by whom they should be signed. It may in individual case dispense with the production of a certificate and may by general order exempt any specified class of government servant from the operation of this rule, ठीक है। कहता है एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस रूल नो पर्सन मे बी अपॉइंटेड, बोलता है एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय दिस रूल, ठीक है।
यहाँ बता रखा है, तो सिर्फ नो पर्सन मे बी अपॉइंटेड इन इंडिया टू अ पोस्ट इन गवर्नमेंट सर्विस विदाउट अ मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ द हेल्थ. ठीक है. द सेंट्रल गवर्नमेंट मे make rules prescribing the form in which medical certificate should be prepared and the particular format of other officer by whom they should be signed. It may in individual case dispense with the production of and may by general order exempt any specific class of government from the operation. ठीक है. तो मैंने इसके अकॉर्डिंग चलेगा जो इन्होंने बोला. नो अपॉइंटमेंट इन पेंशनेबल एस्टेब्लिशमेंट विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट. नो अपॉइंटमेंट. ठीक है. सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको बस इतना ही रखना है कि नो अपॉइंटमेंट इन पेंशनेबल एस्टेब्लिशमेंट विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं होगा. ठीक है. नो डिस्क्रिप्शन टू इग्नोर सर्टिफिकेट डिक्लेयरिंग वन अनफिट. नो डिस्क्रिप्शन और सर्टिफिकेट डिक्लेयरिंग वन अनफिट. ठीक है. उसको आपको वो नहीं करना है. अपॉइंटमेंट बिफोर मेडिकल एग्जामिनेशन रिटेंशन इन सर्विस ऑफ दोज डिक्लेयर्ड टेम्परली अनफिट सब्सिक्वेंटली. मतलब अपॉइंटमेंट जो है बिफोर मेडिकल एग्जामिनेशन एंड रिटेंशन इन सर्विस ऑफ दोज डिक्लेयर्ड टेम्पररी अनफिट सब्सिक्वेंटली. ठीक है. तो उस केस में आप क्या करेंगे? The period after which a second medical examination is to be conducted in specific. Delegation of powers and conditions for appointment in anticipation conditions for appointment. Okay. Applicability of promotion to gazetted post. वहाँ पे second complete exemption from medical only in exception. Entry in service book of production management of fitness on first appointment. Okay. देखा. होता है except as provided by this rule no person may be appointed in no appointment in pensionable installation without medical certificate. No discretion or certificate declare one unfit. ठीक है. आप इसको बस एक बार ये पढ़ लीजिए बस. नो डिस्क्रिप्शन टू इग्नोर वन अनफिट अपॉइंटमेंट बिफोर मेडिकल एग्जामिनेशन एंड रिटेंशन सर्विस दोज डिक्लेयर इंपॉर्टेंट है शुड बी द रूल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन बिकम्स अपॉइंटमेंट स्टेट अवे and them but such a work should reduce to the minimum wage recommended. If the employee not fit for the appointment of post, the rest of the employee should go to the provision that determined forthwith. Okay. Not fit for appointment to the specified post. So be terminated forthwith. So medical opinion should not declare as a candidate fit for temporary employment. So medical opinion candidate fit is requiring reason after physically attendance service. Student has been in the government service and delegation of powers and conditions for appointment of medical service. Delegation of power then
हम देख लेंगे किस टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर आ रहे हैं बेसिकली। तो FR11 क्या कहता है आपका? बोलते हैं अनलेस इन एनी केस इट बी अदरवाइज डिस्टिंक्ट प्रोवाइडेड द होल टाइम ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट इट is at disposal of unless it in case we are government the disposal of the government servant which pays him and he may be employed in any manner required by proper authority without claim for additional remuneration whether the service required for him are such as would ordinarily be remunerated general revenues from a local fund or from the funds of a body which is wholly subscribed on by the government. ठीक है, बोलता है unless in any case or be it otherwise recently provided the whole time of a government servant is at the कहता है the whole time of a government servant is at the disposal of the government which pays him. He may be employed and he may be employed in any manner required and he may be employed in any manner required by the proper and required by proper authority without claim or for additional remuneration without claim for additional remuneration whether the services required of him are such as would ordinarily be remunerated from general बोलता है unless in case it be otherwise distinctly provided the whole time of a government servant is at the disposal of the government which pays him and may be employed in any manner required by by proper authority without claim for additional remuneration where the services required of him are such as would ordinarily be remunerated from general revenues from local fund or from the fund of a body incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the government. Whether the services जो हैं required of him are such as would ordinarily be remunerated from general revenues from local fund or from a fund of a body corporate or not, which is corporate or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the government. Okay? Unless in any case it is otherwise provided in these rules, a government servant on acquiring lien on a post will cease to hold the lien previously acquired on any other post. Unless in any case it is in these rules, a government servant on acquiring a lien on a post will cease to hold the lien previously acquired on any other post. Yes, ये तो है ही आपका. A government servant on acquiring a lien. Government servant on acquiring a lien post will cease to hold the lien previously acquired on any other post. ठीक है. So the government servant who has acquired lien on a post retains the lien on that post while performing the duties. He retains की बात कर रहा है कब बात है retains the while performing the duties of that post while on foreign service or holding a temporary post or officiating in other post during joining time on transfer to another post unless he is transferred along with the title to a post on lower pay in which case his gain is transferred to the new post from the date on which he is relieved to his duties in earlier post while on leave and while under suspension. Okay? A government servant who has acquired lien on a post retains the post on leave. लीव पर भी होते थे while under suspension भी होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है while under suspension आप जो है होल्ड करते हो ठीक है while performing the duties of that post while on foreign service or holding a temporary post hold कर रहे हो तब भी और officiating in another post during joining time on transfer to another post ठीक है on transfer to another post unless he is transferred along with his title to a post on lower pay in which case his lien is transferred to the new post from the date on which he is relieved to his earlier post. But that no lien together joining to on transfer to another post में कर दिया तो unless he is transferred along with his title unless जो है he is transferred along with his title to a post on lower pay first in which case his lien is transferred to a new post from the date on which he is relieved. No lien जो है no lien shall be retained in government shall be retained तब इसमें where the government servant has proceeded on immediate absorption अगर कहीं पर आपकी immediate absorption हो जाती है वहाँ पर basis on post or service outside his service date of absorption और या फिर आप foreign service में चले गए beyond the maximum limit beyond the maximum limit admission under the order ठीक है Retention of lien in civil post when called to army service of the army in India. Reserve of officers who are employed under this government shall, when called to army service, retain a lien on their civil post during the retention of lien in parent department in government servant getting employed in other department. Yes.
फिर बोलता है आपका रिटेंशन वायलेंट हैपनिंग ऑन डेवलपिंग कंट्रीज ऑन गवर्नमेंट बेसिस रिटेंशन है। देन बोलता है आपका इसके बाद आता है आपका 13 का है आपका, फिर आता सीधा आता है 14A, except as provided in Rule 13 and Clause D of the rule. A government servant lien on post may in no circumstance be terminated if the result will be to leave him without a lien upon a regular post. Okay? बोलता है except as provided in Rule 13 Clause D while on leave. Okay? 13 and Clause D of this rule. Okay, Clause D. A government servant lien on post shall stand terminated on his acquiring a lien on another post under the, तो यानी कि वो जितना भी रूल 13 में दे रखा है वो, और क्लोज डी दे रखा है ये, गवर्नमेंट सर्वेंट लियन ऑन पोस्ट जो है, गवर्नमेंट सर्वेंट का जो विलियन इन नो सर्कमस्टांसेस जो है बी टर्मिनेटेड रिजल्ट इफ द रिजल्ट विल बी टर्मिनेटेड लीव हिम अपॉन अ रेगुलर पोस्ट। ठीक है, तो बोलता है एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन 13 और क्लोज डी। ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट लियन ऑन पोस्ट शैल बी स्टैंड टर्मिनेटेड ऑन ओन stand terminated कब, on acquiring his lien on another post whether under the government outside the quarter on which। फिर बात करता है आपका 14 भी बोलता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ रूल 15। ठीक है, द प्रेसिडेंट मे ट्रांसफर टू अनदर पोस्ट इन द सेम quarter the lien of a government servant who is not performing his duties in relates the subject to the provision of rule 15। प्रेसिडेंट जो है द प्रेसिडेंट मे ट्रांसफर, प्रेसिडेंट अपना कर सकते हैं, प्रेसिडेंट जो है मे ट्रांसफर टू अनदर पोस्ट इन द सेम quarter, may transfer to another post in the same quarter lien of a government servant who is not the lien of a government servant who is not performing the duties of the post to which the lien relates. President may transfer government servant, they may transfer government servant from one post to another post, provided that except on account of ineffective misbehavior on his return। ठीक है, द प्रेसिडेंट जो है अपने तरफ से होता द प्रेसिडेंट मे ट्रांसफर गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर प्रोवाइडेड दैट एक्सेप्ट, किस किस में एक्सेप्ट कह रहे हैं, एक्सेप्ट on account of inefficiency or misbehavior, president may transfer government servant from one post to another except on account of inefficiency or misbehavior on his written request. Government servant shall not be transferred to or except in case covered by rule 49 appointed to officiate on a post carrying less than the pay of the post holds a lien। ठीक है, the president जो है may transfer government servant from one post to another provided that इन पे नहीं करते एक्सेप्ट ऑन अकाउंट ऑफ इनएफिशिएंसी और मिसबिहेवियर or on his written request. A government servant shall not be transferred to or except in a case covered by Rule 49 shall not be transferred to or appointed to officiate in a post carrying less than the pay shall not be transferred. He shall not be transferred to a post appointed to officiate in a post carrying less than the pay of the post on which he holds a lien। से नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, प्रेसिडेंट मे ट्रांसफर टू अनदर पोस्ट इन द सेम क्वार्टर में ही president may transfer to another post in the same the lien of a government servant not performing the post to the lien। Okay, first section कहता है a government servant may be required to subscribe to a provident fund, a family pension fund or another fund in accordance with such by order। ठीक है, तो may be required to subscribe provident fund or a family pension fund or another similar fund in accordance with the rules as the president may by order prescribe। ठीक है, बोलता है subject to the to any exception specifically made in these rules
and to the provisions of sub-rule 2, an officer shall begin to draw the pay and the allowances attached to his tenure of a post with effect from the date when he assumes the duties of that post, and shall cease to draw them as soon as he ceases to discharge those duties. Thus, subject to any exception specifically made in the rules and to provision of sub-rule 2, an officer shall begin to draw, मतलब कोई भी officer जो है, an officer shall begin to draw the pay and allowances attached to his tenure of post with effect from the date when he assumes the duty. When he assumes the duty, ठीक है, तब से हो जाना चाहिए. And shall cease to draw them as soon as he does. An officer who is absent from duty without any authority, provided that an officer who is absent from duty without any authority shall not be entitled to pay any allowances, any allowances so the provided that an officer who is absent from duty without any authority, okay, shall not be entitled to any pay and allowances during the period of such absence. Yes, अगर without अगर आप absent होते हो, ठीक है, and that too without any authority, you are not entitled to any pay, ठीक है. The date from which a person recruited overseas shall commence to draw pay on the very first appointment shall be determined by the general and special order of the authority by whom it is appointed. ठीक है. Then 17A कहता है आपका यहाँ पर, without prejudice to the provision of Rule 27 of the CCS pension rules, a period of an unauthorized absence, a period of an unauthorized absence in the case of employees without prejudice to the provisions of Rule 27 of the CCS pension rules 1970, a period of an unauthorized absence जो बोलते हैं ना, in the case of employees working in without a period of unauthorized absence, a period of unauthorized absence के बारे में क्या बोलता है, in the case of employees working in institution during a strike which has been declared illegal under the provision of this or any other law from the time being, person of unauthorized absence without prejudice to the period of an unauthorized absence in the case of employees working the industrial establishment working current during a strike which has been declared illegal under the provision of this and any other law from the time being in force. In case of other employees as a result of action combination or in concerted manner such as during a strike without any authority from or valid reason to government authority, तो ये जो है without prejudice period of any authorized period of any ठीक है. In the case of other employees as a result of action in combination as a result of a combination or in concerted manner during a strike such as during a strike without any authority from or valid reason to the satisfaction of the case of an individual employer remaining absent unauthorizedly not deserting the post shall be deemed to be cause an interruption. So, जो है ना, ये जो है that shall be deemed to be cause an interruption or break in service unless otherwise decided by the competent authority for the purpose of LTC quasi permanency and eligibility for appearing in department minimum period of time. Okay. Remaining absent in individual कोई भी employee है remaining absent unauthorizedly, तो उनका जो है shall be deemed to cause an interruption or break in service unless otherwise decided by the competent authority for the purpose of LTC या quasi permanency or eligibility for appearing in department for ठीक है. ठीक है. ऑलराइट, सो विद दिस हमारा जो अभी जो है FR 18 तक हो गया है, ठीक है, हमारा 18 तक कवर हो गया. इंटरेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. विद दिस थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट